Students, welcome back. In this video, we are going to learn Unit 3 DBMS Class 10 IT. See, in today's session, we will cover the important keys used in database, used in DBMS. But before that, we need to understand the concept of table and its related elements. So, let's start with the tables. See, table is, as we all know, table is the combination of rows and column, but it is the primary and basic unit to design any database. जैसा हम सभी जानते हैं, जिस भी तरह का database आप store कीजिए या create कीजिए, you are storing the content in a tabular format only. So, a table is very important element of a database, and a database can have one or more tables. One or more tables, and each table in the database containing the information about one type of item, and every database table should have one or more field designated as key. अब ये हम लोग खास करके इस पूरे अपने सेशन में बहुत डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी कीज. ओके, तो लेट्स मूव. पहले देखते हैं कि टेबल्स की एलिमेंट कौन कौन से हैं. फर्स्ट यू कैन सी फील्ड or you can see attribute. Fields actually are also known as attribute. Now see, what are these? Actually अभी तक हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि table is a combination of rows and column, and vertical combination of cells are column. Now these column is considered here as, अब ये जो column है ये यहाँ पर consider किया जाता है as field. तो these are the fields, okay, or attribute. And a field is a set of data value of a particular data type. Suppose this is the example. अगर हम यहाँ की बात करें तो you can say log ID, operator and resolve and duration. These are the different fields of the given table. Come for the next. Another element of table is record or tuple. These record and tuple, you can say the complete row. See, every table is having row and column. Column को हमने नाम दिया यहाँ पर field. Okay, अब आता है row. For row, we can identify that particular record of a information. Like you can say the complete row information about a particular is known as record, and record is also known as tuple. So these are tuples or record where we can find the particular information and the complete information about the individual. Suppose you can see, यहाँ पर आप देख रहे हो कि suppose log ID for 242. These all information about this log ID 242 comes in a single row. So we can say the complete row information about a table is a record. And yes, each record of a table represents a set of related data. Okay. Now come for the given table. Here you can see another example of the table. Here we can see these are the information about the student's detail. And as we can see, the column heads are like SR number, registration number, class, student name, father name, contact number, Aadhaar and marks and percentage. जैसा आपका एक स्टूडेंट डिटेल रिकॉर्ड फिल किया जाता है. Here we can see SR number, registration number. These are what? These are the fields. So we can see that these are the fields of the table. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि these are the fields, several fields. So all these are fields. So we can say कि the number of fields in a table is 10 here. And at the same time you can see the records. Yes, you can see the n number of records also filled. And these are the record. Complete row information about a particular is record. So I have marked one record here. In the same way, you can understand that there are complete 7 records are there in the student table. I hope now the table, records and field are clear to you. Now come for the next. See children, after creating a table and filling the data and maintaining the record and fields, this is another important thing, that record should be unique.
we need to understand the uniqueness of the record is how so important in the database. See, as you can see here, in the given table, suppose I want to access the record of Aman. Suppose मैं एक record access करना चाह रही हूँ अमन का, जिसके father का नाम Mr. विजय है. But there are two Aman in the list. इस table में there are two Aman. So it may possible कि मैं जो अगर मैं name के according record access करती हूँ, इस table को access करती हूँ, तो I can access the record of Aman in place of that जिनके father Mr. विजय हैं, मैं उनका record निकाल सकती हूँ या निकल सकता है जिनके father का नाम Mr. राम है. Which is wrong, which should not be there in the correct database. तो database में ये करने का एक सही pattern नहीं है. तो यहाँ पर duplicacy हो रही है, and in the way we cannot identify or we cannot have the access of the correct data or record as we want. So for this we need to designate a key, which is again very important concept of this chapter of this session. As you can see here, important feature is record uniqueness. So ये record uniqueness कैसे होगा और कितना ज़रूरी है? अगर हमें इन दोनों में से पर्टिकुलर वही अमन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे ही एक्सेस करना है, तो हमें इसको यूनिक एक आईडी देनी होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना होगा उस रिकॉर्ड को, तभी आप उसको यूनिकली एक्सेस कर सकते हो. So it is important to be able to distinguish between the different items having the duplicate value, and every database table should have designate a key. यहाँ से बात शुरू होती है कीज की. द नंबर ऑफ कीज वी कैन यूज, जो कीज हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस में. सो इन DBMS and in the RDBMS especially, the data can be integrated using keys, and we have number of keys, जो different types of keys we are using as per want. You can see here there are different types of keys. First is primary key, then composite primary key, then candidate key, then alternative key, and foreign key. See, one by one we are going to proceed with all the other key with example. Now starts with primary key. See, primary key is again one very important concept that you have to understand and know as per the knowledge and for the examination purpose of you. This is very important. Okay, so let's start. See, primary key का concept समझ लीजिए पहले. Primary key is a field of a table where all the data are uniquely stored. All the data are uniquely stored means आपके टेबल में जो कोई भी फील्ड्स होंगे उनमें से एक ऐसा फील्ड आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो भी डेटा होगा उसमें डुप्लीकेसी ना हो. There is no chances of duplicacy. Then you can make it as primary key. Okay, the field which store the unique value for each record. Okay, that can be a primary key. और इसके बाद कुछ conditions हैं for primary key, that there should be one and only one primary key in a table and primary key cannot be null. तो चलिए example से देखते हैं और समझते हैं कि primary key क्या है. But before understanding the primary key, we need to understand one another key, that is candidate key. अभी अभी हमने बात की थी कि there are different keys and all the keys are actually interrelated. तो ऐसा नहीं है कि आप एक की को पढ़ेंगे और फिर उसको अलग से दूसरा इंडिविजुअल की को पढ़ेंगे. That all the keys are interrelated and you need to understand all together, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. So start with candidate key. See, whenever you are going to find a primary key, it means you are going to find the eligible field to be a primary key. Then you are searching for the particular, वैसा आप field search करते हैं जहां पर आपको सारे data different मिलेंगे. As we can see here that अगर मुझे प्राइमरी की बनाना होता अपनी इस टेबल में, ये स्टूडेंट टेबल है हमारी, अपनी इस टेबल में अगर मुझे प्राइमरी की बनाना होता तो प्राइमरी की के डेफिनेशन से मैं आगे चलती और मैंने सोचती दैट वॉट एवर द फील्ड एबल टू स्टोर द यूनिक डेटा देन आई विल मेक अ प्राइमरी की. फाइन, दैट इज ओके. बट इन दिस टेबल आई कैन सी दैट SR number, registration number and Aadhaar card number also, they all are having the field which are having the unique value. इन सब के पास unique value है
But the condition of primary key, as we studied just before, that rule says there should be one and only one primary key. Then it is not possible to make all the fields as a primary key, even they are eligible. Okay, then what happened? Before selection of primary key, whatever the eligible fields that can be a primary key, that are collectively known as candidate key. Okay, तो वो सारे fields जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, इट मीन्स वो यूनिक डेटा स्टोर करते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैंडिडेट की. It means the candidate key is a table is defined as a set of keys that is minimal and can uniquely identify the row in a table. किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा जितने भी fields uniquely data store करते हैं, they all can collectively named as candidate key. Okay, now come for the next. Now you can see from these candidate key, अब ये सारे candidate key हैं like SR number, registration number and Aadhaar card number, because they all can store the unique data in that field. Now user or the database creator can select any one from them to be a primary key, because पहले हम क्या select करने गए थे, हम choose तो करने गए थे primary key. Then I find कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसे कॉलम्स हैं, एक से ज़्यादा ऐसे फील्ड्स हैं जो प्राइमरी की स्टोर बन सकते हैं, प्राइमरी की के लिए एलिजिबल हैं. बट ऑल तो वी कैन नॉट मेक. इन दैट केस व्हाट वी डू इन दैट केस, दे ऑल आर individually the candidate key, they all are collectively the candidate key, and from all candidate key यूजर जो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है उसको पता है कि हमको किस बेसिस पर अभी डेटा के साथ डीलिंग करनी है, देन कैन सेलेक्ट वन एज अ प्राइमरी की. सो आई हैव सेलेक्टेड रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ प्राइमरी की फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट की. आई होप द प्राइमरी की इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग फर्दर, अब एक और चीज है जो यहाँ आपको इसी टेबल में, सी वन टेबल इज एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग, ऑल द कीज and maximum keys because they all are somehow interrelated, तो सबको अलग से जाके देखने की जरूरत नहीं है. See, there are SR number, registration number and Aadhaar number. These all are collectively candidate key. Now user has selected or picked one from them to be a primary key, that is registration number. Fine. Now after the selection of the primary key from the candidate key, the another fields are left, जो बच गए हैं कैंडिडेट की, उनको आप एक अलग नाम से पहचानोगे, that is alternate key. Like from SR number, registration number and Aadhaar number, these are the candidate key. I have chosen one, the registration number, to be a primary key for my table. Then the rest, that SR number and the Aadhaar card number is named as alternative key. So here in the same table, you can identify the three different keys. These are the example for that. Now come up for the next. Another key, that is composite key. This is also very important. After primary key, it happens sometime that there is no such field that is having the unique data throughout. In that case, what happened? What we can do? Then we can go with composite key. See, if any single attribute, you can say if any single attribute, that is field of a table is not capable, the condition is required here children. If any single attribute or you can say कोई एक single field is not eligible to be a primary key, then what happened? Then we are going with the composite key. Then it cannot be identify the row uniquely. तो ऐसा है कि हमें तो फिर रो तो यूनिकली आइडेंटिफाई करनी ही है. अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप एक से ज़्यादा फील्ड को एक साथ कॉल करेंगे, एक साथ उसको सेलेक्ट करेंगे टू बी अ प्राइमरी की. सो यू कैन सी हियर इन अनदर वर्ड अ प्राइमरी की दैट कंटेन द कॉम्बिनेशन. अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज तक, लास्ट टेबल तक देखा था, वहाँ बहुत सारे थे जो एलिजिबल थे टू बी अ प्राइमरी की, उसमें से हमने किसी एक को पिक किया.
एक होते तो भी एक को पिक किया, बट द कंडीशन हियर इज कि कोई एक ऐसा फील्ड हमारे पास नहीं है जो यूनिक डेटा या वैल्यू स्टोर करता हो। लाइक स्टूडेंट्स नेम, ये भी रिपीट हो सकते हैं, फादर्स नेम, ये भी रिपीट हो सकते हैं, एड्रेस कैन ऑल्सो बी रिपीटेड, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर हाउ, सपोज यू आर टू ब्रदर्स एंड सिस्टर एज अ स्टूडेंट, तो सबके एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर तो फादर के एक ही शेयर होंगे। सो हम वो सारा स्कोप और चांस लेकर चलते हैं जहां भी कोई यूनिकनेस ना हो। In this field, in this table, I cannot find any individual independent field to be a primary key. Then also we need to call we need to access the data uniquely. In this case, the primary key that consists of combination of two or more fields, that is composite key. That is, children, composite key. See here, if no individual field is there to be a primary key, then I am selecting both student's name and father's name for the unique access of record. That Mr. अब ये आपका डेटा ऐसे कॉल करेगा लाइक मिस्टर अमन, द स्टूडेंट अमन जिनके फादर का नाम मिस्टर राम है, आई वॉन्ट टू एक्सेस दैट डेटा। ओके, तो इन दिस वे वी हैव द कंपोजिट की। कम फॉर द नेक्स्ट। Now one another important thing, that is foreign key. Yes, now you can see here the foreign key is an attribute value in a table that acts as the primary key in another table. Okay, and this foreign key is especially used for linking. Let's have example. See, here you can see two tables, table 1 and table 2. See, remember one thing. Whenever you have to talk about or write about the foreign key, then you must go that whenever we are dealing with more than one table, then only the existence of foreign key will be there. Okay, जब आप एक से ज़्यादा टेबल के साथ डीलिंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की के साथ आप टेबल के साथ आप स्टोरिंग कर रहे हैं डेटा, और उनके बीच में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, देन वी आर गोइंग फॉर फॉरेन की। एज एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, here one is table 1 and another is table 2. Fine. In table 1 I selected the registration number as a primary key, that I can select. जैसे हम लोग की अभी डिस्कशन हुआ था like primary key, how I select this primary key. तो I find registration number is the independent column or the field or attribute that is having the unique data, so I make it as a primary key for my table 1. Okay. Now we have table 2. See children, it is never necessary कि आपने अगर मल्टीपल टेबल्स पर काम कर रहे हो तो जो प्राइमरी की आपने एक टेबल में बना दिया वही प्राइमरी की आप हर टेबल में बनाओगे। नो, प्राइमरी की इज द इंडिविजुअल मैटर फॉर द इंडिविजुअल टेबल। एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, दैट कैन बी डिसाइडेड देयर ओनली। इट इज नेवर रिक्वायर्ड कि एक बार हमने जो प्राइमरी की बना दी है वही टेबल में प्राइमरी की बनेगी। नो, सो इन टेबल 1 आई हैव सेलेक्टेड रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ प्राइमरी की, फाइन, बिकॉज आई हैव टू वर्क विद द रजिस्ट्रेशन नंबर. In table 2, we work upon the Aadhaar card and a link. So I have selected the Aadhaar card as a primary key. That also I can select. No problem. जब हम table 2 के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो हमें आधार कार्ड के बेसिस पर कुछ फिल्टरेशन करना है, तो I can select one आधार कार्ड नंबर और आधार नंबर to be a primary key of my table. Fine. There is no problem. After that, the matter comes for foreign key is, suppose you can see the foreign key create a link between the table and if it's a primary key in another table. अब यहाँ पर table 1 की जब हम बात करेंगे, when we are talking about table 1, then we find that in any another table, table 1 के लिए another table is table 2. तो in table 2 आधार number is primary key. In table 2 आधार number is primary key. It is used in table 1 too. ये table 1 में use हुआ है. So in table 1, this is again the special and the different name of key identified with this, and that is foreign key. Okay. See, I explain once again. Whenever we find that we are working with two tables, then primary key of another table is used in that first table is known as primary, is foreign key, and foreign key is used to establish the link. It is used to create the link between the table.
Okay, I hope now foreign key is clear to you. फॉरेन की का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब एक से ज़्यादा टेबल में आप काम कर रहे होंगे. एंड वी आर फ्री टू चूज एनी प्राइमरी की इन एनी टेबल. टेबल 1 में हमने सेलेक्ट किया है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, टेबल 2 में हमने सेलेक्ट किया आधार कार्ड नंबर. एंड फॉर टेबल 1 इन another table's primary key is used in table 1 and it is named as foreign key. I hope children these keys are very much clear to you. If any query is there, then you can ask on the comment box. Okay children, now we have a small assessment for you. It will really help to ready with your examination point of view. So try to do this, and if you have any other further query, and I have given the link of part 1 of starting the database in the description box. If you want, then you can check. Thank you children.